क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, the point two comma minus 5 is a vertex of a square. One of whose sides lies on the line x minus 2y minus 7 is equal to 0. Calculate area of a square. देखें, स्क्वायर के 4 वर्टिसेस में से एक वर्टेक्स दे रखा है। कौन सा वर्टेक्स है? वी डोंट नो अबाउट दैट। 4 साइड्स में से एक साइड की इक्वेशन दे रखी है। कौन सी साइड की इक्वेशन दे रखी है? वी डोंट नो अबाउट दैट। हम पहले तो टेस्ट करेंगे कि जो साइड दे रखी है क्या पॉइंट उसी साइड पे मौजूद है या नहीं। तो उसका तरीकाकार बड़ा सिंपल सा है। तो लाइन को इस पॉइंट में से पास कराए, अगर ये ओबे करे इसका मतलब लाइन इसमें से पास हो रही है, ओबे ना करे तो इसका मतलब इसमें से पास नहीं हो रहा है। कंसीडर द गिवन स्ट्रेट लाइन L which is equal to x minus 2y minus 7. Point is 2 comma minus 5. Replace x by 2 and y by minus 5. So 2 minus 2 into minus 5 minus 7 is equal to 0. 2 plus 10 minus 7 is equal to 0. 12 minus 7 is equal to 0. 5 is not equals to 0. इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट नहीं है। जब ये स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट नहीं है तो अब आप फिगर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर है, फर्ज करें जो स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है वो इस साइड की इक्वेशन है। तो पॉइंट ये भी नहीं है, पॉइंट ये भी नहीं है, क्योंकि अगर ये पॉइंट होता तो इस लाइन को ओबे करता, ये पॉइंट होता तो भी ओबे करता। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक पॉइंट आपको दे रखा है, तो दोनों मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एक पॉइंट को मार्क करें कि ये पॉइंट P है और ये स्ट्रेट लाइन है। अब आप इस साइड की लेंथ फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला। तो यूज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड लेंथ ऑफ दिस साइड। लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर it is equal to PL. So use perpendicular distance formula, which is mod of AX1 plus BY1 plus C divided by square root of A square plus B square. So A is the coefficient of X, which is equal to 1.
x1 is 2. B is the coefficient of y, which is -2, y1 is -5, C is equal to -7. All divided by square root of a square yani 1 square plus b square yani -2 whole square. It is equal to 2 plus 10 minus 7 all divided by square root of 1 plus 4. It is equal to mod of 5 divided by square root of 5. Mod of positive number means positive square root of 5. रूट 5 से मल्टीप्लाई भी कर दें, रूट 5 से डिवाइड भी कर दें, रूट को रैशनलाइज करने के लिए, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट इंटू रूट, रूट कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, बाकी बच गया स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स। ये हो गई लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। क्यों फाइंड की हमने लेंथ ऑफ साइड? हमने इसलिए फाइंड की है क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें लेंथ ऑफ साइड की ज़रूरत होगी। अब असल सवाल की तरफ आइए। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड होल स्क्वायर। तो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो जब लेंथ और ब्रेथ एक दूसरे के बराबर है स्क्वायर में तो तमाम साइड इक्वल होती है, इसलिए हमने लिखा साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर। इट इज इक्वल टू रूट 5 होल स्क्वायर which means 5 square units। ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, वो भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 20 is given that given that 3x minus 2y minus 5 is equal to 0 and 2x plus 3y plus 7 is equal to 0 are the equations of the two sides are the equations of two sides of a rectangle and the 2 minus 2 comma 1 is one of its vertices, one of its vertices. Calculate area of a rectangle। देखें, रेक्टेंगल की 4 साइड्स में से 2 साइड्स गिवन। कौन सी 2 साइड्स हैं?
ये आप डिसाइड करेंगे स्लोप्स फाइंड करके। अगर स्लोप्स इक्वल आ गए इसका मतलब पैरेलल साइड्स। स्लोप्स अगर इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर आ गया इसका मतलब ये परपेंडिकुलर साइड्स हैं। तो जब तक आप स्लोप फाइंड नहीं करेंगे आपको ये पता नहीं चल सकता कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो L1 और L2, L1 is suppose 3x minus 2y minus 5 is equal to 0. L2 is 2x plus 3y plus 7 is equal to 0. Consider L1 and L2 one by one and find its slopes. Find their slopes. L1 is 3x minus 2y minus 5 is equal to 0. So 3x minus 5 is equal to 2y. 2y is equal to 3x minus 5. So y is equal to 3x minus 5 whole divided by 2. Y is equal to 3 upon 2 into x plus minus 5 upon 2. Compare this equation with y is equal to mx plus c. इसका मतलब slope of this line. It is equal to 3 upon 2. First line का slope 3 upon 2 हो. Now consider L2. L2 is 2x plus 3y plus 7 is equal to 0. 3y is equal to minus 2x minus 7. Y is equal to minus 2x minus 7 whole divided by 3. इसका मतलब y is equal to minus 2 upon 3 multiplied by x plus minus 7 upon 3. Compare this equation with y is equal to mx plus c. This implies m2 is minus 2 upon 3. आपको दोनों लाइंस के स्लोप्स मालूम हो गए। अब आप ये देखें कि इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है बिकॉज m1 into m2 is equal to 3 upon 2 into minus 2 upon 3. ये 2 भी कैंसिल, ये 3 भी कैंसिल। इसका मतलब m1 into m2 is equal to -1. इसका मतलब L1 is perpendicular to L2. इसका मतलब ये दोनों साइड्स एडजेसेंट साइड्स, क्योंकि रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स परपेंडिकुलर होती है। यानी इससे ये पता चला कि L1 and L2 आर एडजेसेंट साइड्स। अब ये तो पता चल गया कि L1 L2 एडजेसेंट साइड्स हैं। ये पता नहीं चल सका कि जो गिवन पॉइंट है ये L1 से एसोसिएटेड है या L2 से एसोसिएटेड है, यानी ये कौन सी लाइन पे है भी सही या नहीं। तो उसके लिए आपको पास करा लेना चाहिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। कंसीडर L1 is 3x minus 2y minus 5 is equal to 0. पॉइंट दे रखा था -2, 1, तो वी कैन रिप्लेस x by -2 and y by 1. So 3 into -2, -2 into 1, -5 is equal to 0. -6 -2 -5 is equal to 0. -13 is not equal to 0. इसका मतलब ये पॉइंट L1 पे मौजूद नहीं है। Consider L2. L2 is 2x plus 3y plus 7 is equal to 0. Point is -2, 1 पास कराइए
So 2 into minus 2 plus 3 into 1 plus 7 minus 4 plus 3 plus 7, तो 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये पॉइंट L2 पे भी नहीं। अब आप फिगर बना सकते हैं। अब फिगर बनाई जा सकती है कि पहली बात तो ये कि जो लाइंस गिवन हैं वो एडजेसेंट साइड्स हैं, यानी एक दूसरे की परपेंडिकुलर साइड्स। अगर फर्ज करें ये L1 है, फर्ज करें ये L2 है, अगर पॉइंट L1 को ओबे करता, L2 को ओबे ना करता तो उसकी पोजीशन ये थी। अगर पॉइंट L2 को ओबे करता और L1 को ओबे ना करता तो पॉइंट की पोजीशन ये थी। अगर पॉइंट L1 और L2 दोनों को ओबे करता तो पॉइंट की पोजीशन ये थी। दोनों ही को ओबे नहीं कर रहा तो इसका मतलब सिवाय इसके और कोई पोजीशन नहीं हो सकती। इसलिए अब डिसाइड किया जा सकता है कि पॉइंट कहाँ मौजूद है। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि पॉइंट की पोजीशन ये हो सकती है। अब आइए असल सवाल की तरफ। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों मालूम होनी चाहिए। तो फाइंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ rectangle, it is equal to PL1 according to figure. It is equal to mod of AX1 plus BY1 plus C divided by square root of A square plus B square. A, B and C are related to L1 and X1, Y1 are minus 2, 1. So A is equal to 3, X1 is equal to minus 2, B is equal to minus 2, y1 is equal to 1, c is equal to minus 5, divided by square root of a square यानी 3 square plus b square minus 2 square. It is mod of minus 6 minus 2 minus 5 divided by square root of 9 plus 4. It is equal to mod of minus 13 divided by square root of 13. Mod of negative number, it is positive, divided by square root 13. तो रूट को रैशनलाइज करने के लिए सेम रूट से मल्टीप्लाई भी कर दें, सेम रूट से डिवाइड भी कर दें, तो ये हो जाएगा 13 divided by square root 13 into square root 13 upon square root 13. It is equal to 13 square root 13 divided by 13. 13 तो हो गया कैंसिल, बाकी बच गया भाई स्क्वायर रूट 13 यूनिट्स। स्क्वायर रूट 13 यूनिट्स, ये हो गई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। नाउ फाइंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, breadth of rectangle, it is PL2. Again use distance, perpendicular distance formula, which is equal to mod of AX1 plus BY1 plus C divided by square root of A square plus B square.
Mod of AX1. A, B and C are associated with L2. A is equal to 2, X1 is minus 2. B is equal to 3, X1 is equal to 1, C is equal to 7. Divided by square root of 2 squared plus 3 squared. It is equal to mod of minus 4 plus 3 plus 7 whole divided by square root of 4 plus 9. It is equal to mod of 6 divided by square root of 13. तो रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 6 अपॉन रूट 13 इंटू स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13. It is 6 square root 13 divided by 30. Units. अब आप एरिया फाइंड कर सकते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल it is equal to length of rectangle, which is known, multiplied by breadth of rectangle, which is also known. Length of rectangle, it is square root 13, and breadth of rectangle is equal to 6 square root 13 divided by 13. It is equal to root 13 into root 13 is 13, cancel with this 13. The result will be equal to 6 square units. ये भी चंद अच्छे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन था. Now see question number 15. Question number 15 is D, E, and F are the midpoints of the sides BC, CA, and AB of a triangle ABC, respectively. Now, show analytically that area of triangle ABC is equal to 4 times area of triangle DEF. तो भाई पहली बात तो ये कि ट्राइंगल की बात हो रही है, वर्टिसेस गिवन नहीं है, तो वी यूज जर्नल वर्टिसेस. यूज जर्नल वर्टिसेस. अब ट्राइंगल के वर्टिसेस आप जानते हैं 0, 0, A, 0 and B, C. नाम P1, P2, P3 के बजाय गिवन है ABC. आपसे कहा यह गया है
कि D is the midpoint of BC side. D is the midpoint of BC side. E is the midpoint of CA side. And F is the midpoint of AB side. तो पहले तो आप ये मिड पॉइंट्स फाइंड करें। मेरा ख्याल में ये अब आप खुद फाइंड कर सकते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला यूज करें तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ डी के कोऑर्डिनेट्स जब आप फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 कामा सी अपॉन 2। ई के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड करेंगे तो वो आ जाएंगे b अपॉन 2 कामा सी अपॉन 2 और f के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला तो वो हो जाएगा a अपॉन 2 कामा 0। अब आपने प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल DF। नजर तो आ ही रहा है कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे तो वी गेट दिस होल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। लेकिन आपने एनालिटिकली प्रूव करना है। आप दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करके वेरीफाई कर लें। पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is half of determinant of x2 minus x1, y2 minus y1, x3 minus x1, y3 minus y1। तो A first point x1 y1, B second point x2 y2, C third point x3 y3। ये हो गया A minus 0, 0 minus 0, it is B minus 0 and it is C minus 0। It is equal to half of determinant of A0, B, C। It is equal to half of A into C minus 0 into B। It is equal to half of AC minus 0। It is equal to half of A into C। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नाउ कम टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। area of triangle DEF, formula remains same, half of x2 minus x1, y2 minus y1, x3 minus x1, y3 minus y1। वैल्यूज पुट करें तो half of D is first point x1 y1, E is second point x2 y2। ये हो जाएगा B upon 2 minus A plus B upon 2, C upon 2 minus C upon 2। A upon 2 minus A plus B upon 2 and it is 0 minus C upon 2। ये C upon 2 तो हो गया कैंसिल। बाकी क्या बच जाएगा? बाकी बच जाएगा भाई हाफ ऑफ B minus A plus B whole divided by 2, A minus A plus B whole divided by 2, 0 and it is minus C upon 2। Now it is equal to half of B minus A minus B divided by 2, A minus A minus B divided by 2, 0 minus C upon 2।
अब यहाँ b माइनस बी कैंसिल, यहाँ a माइनस ए कैंसिल, बाकी बच जाएगा हाफ ऑफ माइनस ए अपॉन टू 0 माइनस बी अपॉन टू माइनस सी अपॉन टू, that is equal to half of minus a upon 2 into minus c upon 2 minus 0 into minus b upon 2. It is equal to half of a into c upon 4 minus 0. It is equal to half of ac upon 4. It is equal to 1 upon 8 a into c. ये हो गया area of triangle DEF. अब जो चीज़ आपको प्रूव करनी है वो क्या थी? वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to 4 times area of triangle DEF. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपने फाइंड किया था, इट वाज हाफ ऑफ A into C. एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF फाइंड किया, it is equal to 1 upon 8 A into C. ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 1 upon 2 A into C is equal to 1 upon 2 A into C. Because left hand side is equal to right hand side, therefore it is verified. तो अब कमिंग वीक से मेरा ख्याल में आपकी फेस टू फेस क्लास होगी, तो आपसे मुलाकात होगी। लेक्चर रजिस्टर आप लोगों के अप टू डेट होंगे यकीनन, नहीं तो आप कर लें एज सुन एज पॉसिबल। लेक्चर नंबर और डेट के लिहाज से लेक्चर रजिस्टर 1 है या 2 है, जितने भी हैं वो आप लेके आइएगा। फेस टू फेस क्लासेस में तो ऑलमोस्ट 60 to 70% काम बोर्ड पे होता है, लेकिन ये जो आपने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं तो इसमें तो हमने मोर देन 90% काम आपको कराया है, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। और स्लाइड्स भी हमने आपको भेजी है, तो आपके पास एक्सक्यूज ही नहीं है कि आपका काम इनकम्प्लीट। आपका काम कंप्लीट होना चाहिए। मुझे लगे कि आप लोगों ने लिखने में भी मेहनत की। ओके, थैंक यू वेरी मच।